You have to be with me. आपको मेरे साथ होना होगा. My soul, मेरी आत्मा. You have to be with me. I cannot go with you without you. And if you don't come to me, it's not good for me. And you have to come to me. This is my requirement. And you cannot say no. I would not come. You have to come. आप मना नहीं कर सकते आने के लिए मेरे साथ. क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है और आपके बिना काम नहीं चलेगा. This is Injay Suraj Singh speaking from Bharat India on this day, January 2nd, 2024, evening time. This is about 18:10 p.m. 18:10. Now, this is video about power of soul. पावर ऑफ सोल, आत्मा की शक्ति का वीडियो. मैंने बहुत से वीडियो पहले दिए, बात करता रहूँ आपसे. आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग सम वीडियोस इन बोथ मिक्स अप लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट पीपल अराउंड वर्ल्ड एज वेल एज पीपल इन माय कंट्री कैन अंडरस्टैंड. चाहता हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स से बात करना ताकि हमारे देश के लोग, भारत इंडिया के और बाहर के लोग भी कुछ कुछ समझ सके. बिकॉज दिस वेरी कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक. आत्मा, आत्मा इज फॉर एवरीबॉडी एंड यू कैन नॉट से विदाउट इट यू कैन लिव. आप बिना आत्मा के रह नहीं सकते. आप सबको पता है और जानते भी हैं. इसको आत्मा कहिए, रूह कहिए, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है. जी कहते हैं कुछ लोग कुछ भी कहते हैं. साउल कहते हैं कुछ लोग. इट्स अप टू यू हाउ यू डिसाइड. दिस डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज. और आत्मा को देखते तो नहीं सकते हम. नोबडी कैन सी, बट फील तो करते हैं. फील करते हैं. इसको पकड़ भी नहीं सकते हम. इसको सोचे कि मैं पकड़ के रख लूंगा. That's not going to work. I cannot hold it. Not possible at all. But it's also not possible to do without it. That's also true. Means we have both possibilities. No control on it. No one can control it. And also, without its existence, no one can live. What a statement you can say. ना आप इसके बिना रह सकते हैं और इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं. और इसके बिना आप रह भी नहीं सकते. ये आपके कंट्रोल में आएगी भी नहीं. अगर ये आपके कंट्रोल में आएगी तो आप बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हैं. इफ यू कैन कंट्रोल योर सोल, देन आई थिंक देयर इज नो लिमिट एट ऑल. यू आर मोस्ट पावरफुल person in upper world. And when I say upper world means super world, because world where we are living, this is material based world. This is world where material dominates your body, but otherwise other world from where you came, that is soul world. Atmic Dunya, a world where soul works and soul dominates. Soul works here also in this world, but it works in combination with body, biological body. इस दुनिया में, विश्व में, वर्ल्ड में साउल काम करती है, लेकिन वो अकेले काम नहीं करती है. जिस बॉडी में हम रह रहे हैं, हमारी साउल रह रही है, उसके साथ काम करती है. जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल बॉडी. वो किसी की भी हो सकती है, मनुष्य की हो, जानवर की हो, पक्षी की हो. तो ये बात बार बार मैं समझाता रहता हूँ ताकि आप इस पर सोचें, कुछ खास बात सोचें, एनालाइज करें, समझें. It is your duty, whoever wants to understand this, that you have to think on this, you have to read on this, you have to understand this, you have to listen to this, you have to analyze it, and you have to find problems within this, and you can solve your problems. आपकी अपनी समस्याएं ये खुद सॉल्व करेगी, लेकिन आपको इसके साथ आना होगा. कहते हैं जी अपने अंदर को झांकिए. हम लोग बोल देते हैं हिंदी में. Yes, you have to study yourself, and you can say one has to study self. Self study means अंदर झांकना. अंदर झांकने का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर के अंदर झांकें. अंदर झांकने का मतलब अपनी अपने ख्यालों में अंदर झांकें. आप क्या सोच रहे हैं? What are you thinking? That point is very important. हम कहते हैं I'm thinking. Who is thinking? That point is, are you thinking? Can your body think? Question arises, can your body think? Or there is someone else who thinks on your behalf and tells you, and you can say, yes, I am thinking. So that I am is replaced by someone else, and that someone else is unknown. That someone else cannot be physically verified. That cannot be digitally verified. That can be only verified by your power of thinking and concentration. So it is very important to analyze it properly and use it, because this is something which is given to you free of cost. You're not to pay any bill, any valuation, any interest, any sums on this. And it comes to you without any, you don't have to send any vehicle to, to let it come to you. Means you have to do nothing. Your investment is nothing there, except that you have to use it. आपका कोई वहाँ खर्च नहीं हो रहा कि आप इसको लाएंगे, इसको खाना देंगे, पानी देंगे, कुछ करेंगे ताकि आपके काम आए. ये आपका फ्री में मिला एम्प्लॉय है.
आप कह सकते हैं Saul is your employee, Saul is your associate, and it helps you do your job without any issue, without any problem which cannot be solved. And you can define it a number of way. There is no restriction on that. आप जैसे भी चाहें इसको डिफाइन कीजिए, आपके हाथ में है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली तो नहीं है, लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं ये आपके साथ है, कहीं जाने वाली नहीं या जाने वाला नहीं, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं है या इसमें जेंडर की बात नहीं है। दिस इज शक्ति, एनर्जी which you use for purpose of surviving, for purpose of advancing, for purpose of doing everything. And this is such balance, just like your balance in bank, your balance everywhere where you are in material terms. This balance, this quantity, you may call it quantity, you may call it whatever it is, because there must be some unit for it. You don't know, but I can say that this remains expanding always. You have to spend as much as you can do, and again, as much as you do more than that, it will come to you. So you, whatever you spend, you get many more times than that, because your expenditure of this energy means your brain gets more and more trained. When you spend this amount, this money, this balance, this power, it trains your brain, it trains your thoughts, it trains your process of thinking. And that's where you can say you move forward and you cannot even value it, what value it is. But you value something, you are getting more and more energetic and keeping, think, or can say, keeping your age is this much. Are you smarter enough, or you are more advanced than the people others are? Or can you move forward, or can you focus on something in life? आप जितना भी उम्र हो आपकी, लेकिन सॉल आपकी उम्र की परवाह नहीं करेगी, वो आपके एफर्ट्स की परवाह करेगी। वो देखेगी कि उसकी आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। And you need not worry about that, because you have to keep working. It will identify itself, it will assess itself, it shall survey itself whether or not you require its placement, you require its association for time being. It'll be there, don't worry, because it knows what you have to do. Only point is you're a medium for this, or you may say you Saul is a medium for you, whatever you can say this way or that way. But without that medium, without that power, that entity, Saul, you cannot even respire. आप सांस भी नहीं लेंगे अगर आपके पास ये नहीं है। और वो एलिमेंट्री स्टेज पर है, वो बहुत कम क्वांटिटी की है जब आपको सांस लेना है। लेकिन जब आपको माइंड में जाना है, and you have to move into your mind, and that is very very significant stage, that you have to move into your mind. आपको अपने माइंड में जाके काम करना है। माइंड में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकली या फिजिकली माइंड में जाना है, माइंड को एनलाइटन करना है। You have to enlighten your mind with more and more lux intensity. And when mind is enlightened, your many, many files which are stored or which may come to you through soul are stored, and it's your right to make use of those files. And those files are not produced by you or your soul. Soul is just the medium to get to you. These files are available there in God's library for your answer of problem, answer to problem. So I say, soul is very significant, associate to you, or friend to you, or you may say it's a kind of tool to you. Whatever name you give, it doesn't matter, because you have to use it, and it never says you cannot use me. It feels pleased, believe me. It's not question of believe me, it happens, it's confirmed that it never comes in your way to use it. It says, you want to use me, I'm coming, I'm here, use me. And then again, I come more, I will get more and more from my store if replenishment is required. But I am here to work. I never tire out. I'm never in fatigue. I never have stress. I support you in your every activity where work is required, where mind is required, where highest degree of thoughts and contemplations are required. I'm here with you. That's what your soul, which without which you cannot survive, cannot move, and you have to
Lift it up all time. Don't worry about top up, top up, and top up. It shall take talk up depending upon your emotions, depending on efforts. And in fact, that is very, very easy, very, very simple. We have to understand that. It's nothing difficult at all. It's so simple. Only point is we have to realize facts. हमको सच्चाई को समझना है. ये कह देना साहब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अपने आप कुछ नहीं होता. Nothing happens on its own. Your efforts are required, your use of body is required, your use of soul is required, your use of mind is required. And if you can use all these along with earth resources, you can do whatever you intend to do in proper way. And nothing I say it is linked to any kind of faith. It is linked to your only faith that it is your way. Your soul has got no faith, no so I mean this has nothing to do with any so-called religion because it itself is much more powerful than religion or faith is. Therefore, my dear friends, try to understand. I want to say, again, I say, I am not a guru. I am not Swami. I am nothing at all. I am just an individual person like you are, and I feel pleased to share whatever knowledge I have, whatever knowledge I get from superworld, what knowledge I get from my education, what knowledge I get through society, whatever I have, it's good, what in form of energy, in form of opinion, or in form of, you can say, sharing certain descriptions, certain knowledge helps you, helps everybody. And if you can do it, giver is much more powerful than if you give someone to something. So okay, I'm giving you this means you are gaining more even though you give more. So don't worry about that. It is yours. Your body is not yours, but soul is yours. Use of your body weakens your physical strength, but use of soul enhances bodies and minds strength. Maybe you are old sometimes, you are, can say, mature, but your body doesn't help you. I feel tired while working just after 10 minutes or 15 minutes. How can I do? I get more energy? Who shall give me energy? And that point is automatically answered, and no one is going to give you energy. Your energy is already there. Only requirement is that you have to link yourself to that energy, and if you can link to that energy, that is adequate. This point should be very clear. And if you cannot understand this point, then you have to understand. You cannot use this service provided by universe, service provided by God. This service means something. You cannot simply say no. It has to be, it is, it should be, and it has to be. That's a very important point. मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपका अपना स्टोर है, भंडार है, पर उस भंडार को जब तक आप खोलेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि उस भंडार में क्या क्या चीज़ें हैं. स्टॉक है आपका, आपके लिए. आपको अगर पता नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. जैसे कहीं किसी चीज़ में पानी पड़ा रहता है, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो सेप्टिक हो जाएगा, उसमें मॉस्किटोस हो सकते हैं, वो पॉल्यूट हो सकता है. इसी तरह से अगर आपकी सॉल को आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे. भूल जाइए भविष्य क्या है, भूल जाइए पर पीछे क्या था. कोई ज्योतिष, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताएगा आपको, ना वो बता सकता है. लेकिन आपके पास सबसे बड़ा ज्योतिष है आपकी आत्मा. सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी विद यू, biggest forecast with you. There's an agency with you which you have to employ for your work. That energy is soul, atma, whatever you can say, and it cannot cheat you. It always thinks for you.
but you do not care about you, and that is really not appreciable. आपकी अपनी चीज को आप नहीं ख्याल कर रहे तो कौन करेगा? लगे हैं आप बॉडी को सुंदर बनाने में, बनाइए, तो अच्छी बात है। लेकिन बॉडी के फेस को सुंदर बनाना, बॉडी के एलिवेशन को सुंदर बनाना एक बात है, और साउल को यूज़ करना भी बहुत बड़ी सुंदरता में आता है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये किसी और के नहीं है। यूज़ तो इसको आपने ही करना है, कोई और दूसरा नहीं यूज़ कर सकता इसको। देयरफॉर आई एम मच मोर इंटरेस्टेड, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। जो मैं बात करता हूँ पावर ऑफ सॉल की, मैं खाली पीली बात नहीं कर रहा हूँ। इसको समझ, जब तक समझेंगे नहीं आप, आपको विश्वास नहीं होगा अपने आप में। और जिस दिन आपने आत्मा को समझ लिया, तो विश्वास आपके अंदर अपने आप हो जाएगा। बिकॉज use of soul, power of soul, appreciation of soul, it is an energy of whatever unit you may say. People do not know, but it can help you. Medical science may not help you, other sciences may not help you, geology science may not help you, but this science automatically helps you, and you have to seek its help, you have to take its help. जब तक आप सहायता नहीं लेंगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए सॉल को समझना, अगर आप समझ गए तो आप बस बहुत आगे जाएंगे, कि सॉल आपको आगे ले जाएगी, आपके अंदर शक्ति डालेगी। इट गिव यू एनर्जी, सॉल शैल गिव यू एनर्जी, सॉल कैन गिव यू solace, सॉल कैन से okay, don't worry, I am with you. If you cannot get food in time, I give you energy. It shall provide you required energy at that time. When you feel like you're having deficient energy because you don't take lunch or dinner, and there you can say it gives you energy in different pose. So don't worry about that. If you think you have to understand it, you can start understanding. And if you think, no, this is all gossipism, I don't care about this, then thank you very much. If you cannot think beyond this, then what can I do? But the question is, and answer is also, that soul is something that cannot be visualized, that cannot be thought of. You may only say through some religious guru what's happening in this, nothing more than that. And that is why, particularly our young people, they least bother about this. But again, I say, soul is very significant part of life, because it works not only for you in this life, but also it has to work for you once you depart from this life, or you can say in next life. And what happened in previous life, when I say, for example, for me, I was very small kid with many other kids, and we were just, you know, some way could not understand what is life. Is life body? Is life money? Is life house? Is life career? What is after all? Is comfort life or struggle life? Is doing something good for this world is life, or just taking from this world and eating, drinking, and sleeping is life? There may be many classes of life, but only those people who can understand this have to work a little and then take rest. इससे समझने का मतलब ये है, सॉल की मैं बारे में आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा, ना मैं देना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू टेल यू, टू एक्सप्लेन टू यू दैट दिस इज समथिंग which you have not to worry about, but it shall worry you about. It shall tell you indirectly, in whatever way, where you're alive, you're sleeping, you're somewhere else. It knows everything about you. It will say, okay, I'm standing here, I'm being investigated, help me. It happens. हमको ये सोचना है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार आपके माइंड में अगर सेट हो गया कि सॉल मेरी साथी है, सॉल को मुझे यूज करना है, आप मानिए, आप एक चेंज्ड व्यक्ति होंगे। यू शैल get change yourself through your mind and through the considerations. And that's why I'm saying power of soul, which I always share with you, that this is something cannot be, you can say, first of all, sectioned or differentiated.
from you, but in fact, it is something else. It's not your control. It controls you, but you must have capacity to control it. And that is where I'm quite interested in sharing my opinion, my deliberation with you. And that is very important part. If you understand what is power of soul, then you can take this power from your own soul. You can give power to your own soul. You can entertain your own soul because it depends on what soul is there. Interestingly, very few people have started understanding, but they don't understand really soul. They understand something else. In name of soul, in name of orthodoxism, there is a 5 or 10 required units are supposed to be called soul. So, my dear friends, I'm not saying that. I'm not going to say something. Don't do that. You have to think on this. And particularly who are educated, who can understand what I'm saying, उनको सोचना चाहिए कि इस चीज़ को अगर हम समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक्सपोनेंट वर्क, और उसके बाद फिर उसकी कोई लिमिट नहीं, एक्सपोनेंट बन गया तो बन गया, बनाना तो पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और याद रखिए, बिना एफर्ट्स के कुछ होता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बैठे बैठाए आपको मिल जाएगा, तो भाई इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। होता है कुछ केसों में कभी कभी आपके बातें लग जाती हैं और वो शरीर कर देते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं। We have to be very clear that if I am talking to you, I am not talking to someone else. I'm talking means it's not my body. My body is just the medium. Someone else is working around me, and what that person is saying, in fact, that is my own self. My own self. Also, somebody with me in junior position and says, I well, I, मैं कोई किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता. I don't want to keep anybody in delusionary state. No illusion, no delusion, but facts. Because my profession is factual one. Profession in which I have been working since I think around since 19 age, in 68. There was no restriction, I think, but I said that engineering works with facts. If you don't have facts, you cannot say you engineered something. If you want to just run away by doing some job, okay, let it be approved by people, other people or children. I think in that case, something wrong somewhere. किताब या कागज़ की बात नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, वो तो मैं शेयर करूँगा आपसे, अवश्य करूँगा जब मेरे को चांस मिलेगा शेयर के पेज का फेसबुक पे या किसी और पे, that I will do. But without that also, you have to measure yourself every day. Measure doesn't mean with tape. You can measure with directly which materials impact our garment. What is that? That is something very specific. खाना भी आप खाते हैं, पानी भी आप पीते हैं, दवाइयाँ भी आप लेते हैं, सब कुछ आप करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए आप आए थे वो उसको आपको नहीं पता। आपने खा लिया, पी लिया, सब कुछ कर लिया, चलो रेस्ट करते हैं। एक कॉमन आदमी की ज़िंदगी में यही है। इसके बाद वही खाए पिए। However, I can say, आपको समझना है, आपको क्या करना है। फिर कह रहा हूँ, हर बात को पैसे से मत मिलाइए. Everything is not dollar. Everything is not pound. They never feel anything short of maintenance, good maintenance. So that is main point I can say. हम जितना मर्जी सोच लें, लेकिन याद रखना, सोचने के बाद फैसला करना होता है कि किस चीज़ पे काम करेंगे. अगर हम नहीं सोच सकते तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. इंजीनियरिंग में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शरीर हमारा इन्वॉल्व होता है. तो हमारे शरीर को भी सब कुछ आना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है.
बोलना बड़ा आसान है, करना प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको भाव चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, फार्मूला चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, थिंकिंग चाहिए, दूसरे की थिंकिंग भी चाहिए, ये फीडबैक भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। अगर आपको काम करना होता है, उसका मतलब यह खाली कंटेम्पलेशन या कंसंट्रेशन भी खाली नहीं है, और भी साथ में चलेगा। ये बात भी समझनी होगी। मैं कोई आपके ऊपर ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। I have no right to say to anyone to do like this. Yes, I will, as a suggestive measure, I can say, as advisory measure, I can say, do this, because this work of soul is also not my work. It is work maybe I did it in some age, I do not know. It's not telling me what I did. So that's another viewpoint. What got to do, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बातें सामने तो आएंगी और हमको इनको समझना होगा। सॉल आपकी वो मित्र है, वो दोस्त है, वो पेरेंट है, वो भाई है, वो बहन है, वो शक्ति है, वो सारे रिलेशन है, वो दुनिया है। आपको वो दे सकती है जो पूरी दुनिया की दौलत आपको नहीं दे सकती। Your soul can equip you with all wealth, that wealth value of which can be more than value of earth sources. And that is very important point you have to keep in mind while handling all this issue. पावर ऑफ सॉल जैसे भी मेरे माइंड में कुछ आता है, मैं उसको लिख देता हूँ कि पावर ऑफ सॉल क्या कह सकती है। और इसके लिए आपको अपना माइंड चलाना है। एक बार आपका माइंड एकेडमिक में चल गया, फिर आपका माइंड चलता रहेगा, अगर आप सोते ना रहें तो। बीच बीच में कभी कभी मैं सोने की बात जैसे कर रहा हूँ और भी बात कर रहा हूँ, मेटल की बात भी कर रहा हूँ, और वो सब चलेंगी ज़िंदगी में। और सॉल उसके बिना भी नहीं चलेगी, क्योंकि सॉल ने आपका यूज़ भी करना है जैसे आपने सॉल का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर ऑफ सॉल को समझिए, सिर्फ बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम को मत समझिए। पावर ऑफ सॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप कमांड लाइफ में नहीं ले सकते। कमांड लेने के लिए आपको पावर ऑफ सॉल में आना पड़ेगा। कौन कौन से मैकेनिज्म वहाँ हैं, यू हैव टू रीड देम, एंड आई थिंक यू रीड देम ऑलरेडी। Just sometimes what happens already more than 25 minutes, so I have to check my mobile, whether battery is charged or not. Also, here may be some problem with charging. पावर ऑफ सॉल को आप बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में है। आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे, आपके हाथ में है। आप इसको खराब करेंगे, आपके हाथ में है। आप इससे आगे बढ़ेंगे, आपके हाथ में है। When you are regular with it and she is regular with you, or Sol is regular with you, in that case you can say you can chart out many functions at the same time. And if you have some younger sibling, you can give that one. It's very, very important point. मैंने ज़्यादा बोर करना तो सीखा नहीं आपको, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपकी शक्ति को अगर आप काम में नहीं लगाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। पहले आपने स्टडी की, एजुकेशन ली, फिर आप बड़े हो गए, आपने शादी की होंगी, सब कुछ किया होगा, आपने साउल को उस तरफ लगा दिया, जॉब में लगा दिया, आपने उसको घर के फैमिली के मेंबर्स के साथ उनके गुट के लिए लगा दिया या किसी के लिए लगा दिया। लेकिन क्योंकि आपने माइंड का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लॉजिक का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इन दैट केस दैट soul shall not help you until you are ready to receive it. It cannot force you. It can be with you. You know it is with you. You cannot see it, but you may feel, yes, it's with me. What Palestine did, that is important answer. सो साउल को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और इसको कोई फार्मूला नहीं समझा सकता, इसको कोई किताब नहीं समझा सकती, समझ तो ये अपने आप ही आती है जब इसका गुरु नहीं होगा। कभी कभी होता है कि हमारे ध्यान में कुछ भी आ जाता है बाई चांस, सोते जागते बैठते डब्ल्यू में बाथरूम में खाना खा कुछ आ जाता है, हम सोचते हैं क्या हो, मैंने क्या सोचा, अरे मैंने क्या सोचा, थोड़ी सोच आने के बाद सोचा जाता है। और कभी कभी सोते सोते आ जाता है माइंड में, हम समझ नहीं पाते कि मैंने क्या देखा। It's very difficult at the time you see dream of your dream what's coming to you, something unexpectedly comes to your mind. It happens in general life also, as sitting somewhere doing something or thinking something, or something unexpectedly come to your mind and you cannot even know what I was thinking, how it happened. Just in a couple of minutes you forget it, but that remains with you. It may come, it may not come same time, but it shall come when that is required. And that's really wonderful. Means why fantastic system works, that is very significant part of life. सिस्टम काम कर रहा है जी, सिस्टम, आप थोड़ा समझिए, बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन सिस्टम बच्चों में भी है। हर वो हर नया बेबी के अंदर सिस्टम है, कभी तो वो इस विश्व में आया है। Newborn baby is also full of soul. Yes, it cries, it goes like this, when works there, soul works there. As I said before, every normal mind person or sound mind person can say has an aura on head that is about 80 meters diameter, which can be, you can say, about 20 or more than 20 stories building. You have power with you, and those people who have studied, who got education, got academics, and they keep thinking in your profession because they have to work, they have to share their work with others, they have to share responsibility, they have to be accountable. We can say those people are different. Those people can never have stress, even if tension exists with them or remains with them, they still are safer. This fact we have to realize. We have to realize whenever you want, but fact remains that you have to realize. And it happens many times in life. Sometimes unexpected happens, sometimes unexpected happens. I never thought that I will share with you my such opinion, but you see, time comes, not only time comes, but also teachers come, and it happens. If I say no, it is wrong, then I am wrong. Saul remains with me always, and on Sam pattern, Saul remains with you always. Otherwise, there is no meaning at all. सॉल आपकी शक्ति है, इसको पहचानिए। किसी गुरु के चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने खुद गुरु हैं। Do not worry about that you have to go to seek some knowledge from or some blessings from some priest, religious guru, because there is no religious guru. These are all fake. These are all just boasting that we are gurus, but they do not know any meaning of guru. But you are guru. You are own guru. You can compare your way. You are your own guru, your own trainer, your own disciple you are, your teacher you are, your every direction you are. When you are in school, maybe in primary classes or middle classes, at that time you are not responsible mind. But once you got status, that now you are responsible, in that case, your soul is also responsible. And if soul is not responsible, then you can never be responsible. If you are not responsible, and if soul desires and orders you to be responsible, then you have to act like that. You cannot say no. That's what I'm saying, that power of soul is different world.
It doesn't care of anyone, it cares only for its people. बड़ा अजीब लगता है जब कोई ऐसी बातें करता है, अरे आप तो साहब इंजीनियर हैं, आप इतनी पढ़ाई करे हैं, आपने बिल्डिंग भी बनाई हैं और भी कुछ बनाया है, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये डिस्करेजिंग बातें। बताइए, आपने ऐसी बातें करके डिस्करेज तो मिलवा दिया, क्या होगा उससे? मैं हमेशा यही कहता हूँ आप सबसे, अपनी शक्ति को पहचानिए। अपनी शक्ति को आप पहचानेंगे, एक पैसे फ़ायदे क्या होंगे? एक तो आपके शरीर में गलत सलत नहीं बनेगा। You have to raise yourself high. You have to ask your soul, do it for me. If your soul listens, it cannot say, I shall not do for you. तो मेरे दोस्तों, जो ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ, शायद आपको बोर बहुत लग रही होगी। आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, मैं नहीं जानता। आई कैनॉट से वेदर और नॉट यूर अंडरस्टैंडिंग और यूर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अप टू यू। What I'm saying is very, very elementary. You can say it's like we say in English A B C D, or we say in Hindi A E I O U, or in other scriptures something the same way. Soul is my language. Soul is my physique. Soul is my, you can say, card. And soul for me exists everywhere. Like what? It is very simple to understand like that. हम नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। और समझेंगे तो इससे आसान कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर है। ये आपको किसी शॉप से नहीं लानी, किसी जगह से नहीं लानी। हाँ, आपको यूएस की जगह लगाया जा सकता है। If you understand soul, you can understand yourself. And if you understand yourself, you can understand this world. Because once you are with soul and soul is with you, you are all times connected to that operator. Do you know this? It's very simple answer to this question. सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं, उतना आगे जितना आपने सोचा नहीं। You can move forward once you have identified yourself, or you identify your goal, what goal you should be, whether you are in right profession or wrong profession. And you say wrong profession is right, take this right. सॉल अगर आप समझ गए, आत्मा अगर आप समझ गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है एक एक करके निकल जाएगी, क्योंकि आत्मा सब सॉल्यूशन जानती है। Soul knows everything, present, past, and future. And sometimes I've seen during top concentration, you are taught by that power in dreams or otherwise. So we have to think in entirely different way. कैसे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, सवाल ये उठता है। इसमें ना कोई मंत्र की जरूरत है, ना कोई तंत्र की जरूरत है। अपनी तराई को लाओ और उसको बजाओ। It's very important point you have to see. Who can tell you? Nobody shall tell you. Your mind shall tell you. Your feeling shall tell you. And you have to seek knowledge. You have to be hungry for knowledge. And if you are not hungry for knowledge, you say, I am getting good money monthly. I have my parent. I have my wife. I have my husband. All this I have kids. I don't have any problem. Then Saul shall not become a problem. But
सो माय डियर फ्रेंड्स, सॉल को लाइट में नहीं लेना, आत्मा को लाइट में नहीं लेना, क्योंकि आत्मा भी एक तरह से टेक्नोलॉजी है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो भाई? कैसी बातें नहीं मैं कर रहा हूँ। ये सैटेलाइट है आपका, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल वाइड वेब है। योर सोल इज यूनिवर्सल वाइड वेब. Every information is available, and every information is not available. When you seek that, automatically it understands and goes to solve and bring you back to work for that worksheet. That is important part. I am always interested in this, not because I want to enjoy physically, but because I want to keep off my problems because other party doesn't listen. So what can I say? कभी कभी हम लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि मैंने कर दिया, आई हैव डन इट. Everybody becomes, subject to this kind of criticism, or you can say self pleasure that I have done it. But fact remains, nobody has done it. That fact remains because my mind is not in my control, it is in control of that controller. Sitting there, that controller is very powerful, and that controller knows programming of my career, my life, and whatever work I do in single position, single statement. आपको अपनी सॉल्व बढ़ानी है, तो अपने आप को पहले खुद को विश्वास करना होगा कि मेरी आत्मा मेरे लिए है या गलत आ गई है या ये पनिशमेंट है. अगर आप जितना अधिक काम करते हैं, जितना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आपकी पनिशमेंट ऊपर जाती रहती है. कभी कभी हम भी जानते हैं कि सॉल खिलौना नहीं है, बिजली की सप्लाई है आपको. आप कहेंगे बिजली, हाँ बिजली, ये वो बिजली नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरी बिजली है. इसमें हाथ में करंट नहीं लगता है, लेकिन दिमाग में झटके जरूर लगते हैं इस बिजली में. जब आप ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, यू हैव बीन सर्चिंग फॉर समथिंग what it should be, and suddenly it comes to your mind even you did not accept that. कभी आपके माइंड में एक आंसर आ गया जिसको आपने सोचा भी नहीं था. हाँ, आपने प्रोग्राम जरूर किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो फार्मूला एट वंस आपके पास आएगा बिना आपको बताए. Without informing you, that information arrives, and then suddenly, what's that? व्हाट्स दैट थे आपके पास. व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप की बात करूँ. डैट, व्हाट्स दैट मीन्स इंफॉर्मेशन यू रिसीव फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम हियर. So you are a kind of person that time that you may call yourself for that messages, for that information, that you are getting something, and status of being a representative of that power. Here I'm saying representative because if you work for that power, if you work for whole world without expecting or without seeking any monetary gain, then you are a deployment, direct deployment, and you can say interconnected person to our God, everybody's God. You are a special person because that information is coming to you, particularly coming to you. It doesn't come to everybody because everybody, you cannot say everybody is so literate that can understand everything. जब तक नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, और जब समझेंगे तो समझेंगे. That's why I'm saying it's my money, it's not someone else's money. I have to use it my way, or whatever way that God tells me, whatever way.
Same thing I'm saying here. But it is ways, don't abuse your own buildings. It is very difficult. Don't worry about that. It is my soul. Come to me, you have to come to me. If you don't come to me, then you be pulled. I shall pull you. If you don't allow pull, then I shall push you and pull you. You have to come because I made you. I require you. You cannot say I'm not coming because you are my soul. My soul says, come to you. My deficient soul says, come on, come on. We have to do this job. And you are not used to refuse. That is very significant part. Do it, my soul. Do it, don't tell me, do it. Tell me what I have to do. If you want to say you have to do it, tell me what I do. And she will tell you something miraculous it is. Really miraculous. Cannot imagine. But it is miraculous. And that miraculous something is something very significant. Power of soul acts in every action of your life. You cannot say it was absent. It can never be absent. It can never be suspended. It can never be thrashed. It always stays in original number, as I say, soul number. If you don't abuse it, it remains there. If I abuse it, it shall come to me. It's required. Use me, I am here. Don't worry. यही है आत्मा की दुनिया. आत्मा की दुनिया में हम सब एक हैं. कोई फर्क नहीं है वहाँ, क्योंकि आत्मा को कोई धर्म नहीं होता. आत्मा अपना कोई धर्म नहीं मानती. और आत्मा का अगर धर्म कोई है, वो एक ही है धर्म है उसका नाम, और उसका नाम है सौल. उसका एक ही धर्म है सौल. उसका एक ही धर्म है आत्मा. उसका एक ही धर्म है, जो भी आप कहें, रूह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. And people work on that white worksheet. They work somewhere, they want to use it. They, you can say, soul works with you. In fact, you don't work. Your body only is used by that soul, and your mind is operated. That's all information is fed into your brain, your brain structure, and you get something out of that, and that is very significant one. सॉल आपकी है, शरीर आपका है, प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन आपका है, यूज आपका है, मनी आपकी है. मनी का मतलब वेल्थ से नहीं है. मनी का मतलब पावर ऑफ सॉल से है. पावर ऑफ सॉल आपकी. आपकी कौन? यही तो पूछता है. आपकी फ्रेंड, आपकी कह सकते हैं स्पाउस, आपकी कह सकते हैं कुछ भी. आप उसको कुछ भी मानिए, क्योंकि वो आपके शरीर में है. वो तो आपकी स्पाउस से भी ज़्यादा है, आपके बाकी सब रिश्तों से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो शरीर में है. वो आपके शरीर से बाहर नहीं जाती है, लेकिन हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है. जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो इधर-उधर निकल जाती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वापस आती है. एक बात भी समझनी चाहिए. गलतफ़हमी निकाल दो कि हम ऑर्थोडॉक्स की बात कर नहीं, हम ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहे. हम रियल वर्ल्ड एंड रियल एप्लीकेशन की बात कर रहे. दिस इज माय बेस्ट गाइड. Soul is my best guide, my best teacher, my best principal. I'm my best student if I use it. If I don't use it, I throw that power. And whatever I use, for example, if you go to the sound fields, something here exists, there exists. You cannot even access that. इसलिए सॉल का महत्व बढ़ जाता है. सॉल इतनी ऊंची हो जाती है और आपको भी वो उतना ऊंचा उठाती है. समझने की बात है. You are also elevated when Saul elevates. Saul gives you information,
Soul gives you energy. Soul gives you everything which you. It knows much more than what you know, because it reads everything within you, within your mind, and within universe. It knows what is happening, and that what is solution. It tells you certainly sometimes do it, but you cannot listen to that. However, information comes. It comes. Really, it is very wonderful to talk about this and to take receipt of this. And if you cannot do that, then I cannot help it. But I'm talking as such because it is very powerful subject. And if people can understand this, they will get more and more energy. Yeah, and you say if you have more and more energy, where you shall use that energy, you shall use that energy for development of your mind, because development of mind is very significant, because every item developed through these stages remains forever. That is your money. Soul money, that is your energy. Soul energy, that is yours. And you have to enact within yourself. You are legislator of that energy. Whatever way you legislate it, it shall work for you. Whatever way you execute it, it shall work for you. Whatever way you use it, you can use it. You are judge there, you are legislator there, you are executive there. But all these functions only can be done when soul is useful for you. You have to make it useful for you. You cannot say it shall come automatically. It shall come as and when required, because it's so dynamic. It cannot sit idle. ये idle नहीं रह सकती, इसकी problem ये है. So when it's required, it's there within immediately it is there. And but it has to be used. If it's not used, it shall not like you and exit. That's significant point. आपको छोड़ के कुछ समय के लिए जाएगी, ऐश करेगी, बाहर घूमेगी फिरेगी, और जब आपकी जरूरत होगी आके अपना कनेक्शन कर लेगी. मैं इसको बुरा नहीं मानता. ऐसा होता है सिस्टम में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सिस्टम तो सिस्टम ही रहेगा. और जब आप सुबह भी लगाएंगे भोग, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि मैंने यहाँ ये सॉल लगाई थी. जो समझ गया सॉल को, जिंदगी उसकी आगे निकलेगी. एप्लीकेशंस ज़्यादा करेगा. एप्लीकेशंस का मतलब लिखने की एप्लीकेशन नहीं, काम की एप्लीकेशन. आपने जो सीखा है उसके ऊपर और सीखेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर शक्ति आ रही है. यू विल फाइंड मोर एंड मोर इंटरेस्ट in every weekly activity you plan, or you can say I plan this, or I can say I just wore it. I tied up this lace. I don't want lace, but it was in such a way that I can to go without my watch or this. I shall not be derailed, but you have to take precautionary measure, protective measure, just like we call loss preventive measures in our safety world. Loss prevention. So you have to take loss prevention of your soul, and then soul shall take your loss prevention into its own responsibility. And that is really very much required. And if you can understand this, there's nothing else which can be equalized with that. Because again, I say, it is your money. Nobody can catch from this. Nobody can hack it. If somebody hacks it, then it will impact on that one, because it got power from you and you get power from it. And what hacking I mean to say is that I'll explain sometime else. But I'm just talking elementarily about soul. I'm talking something which is very like in English you learn ABCD. I'm just trying to disperse that information from our mind for purpose of dissemination to whole world. Don't worry that it shall go away. This is your baby. You are its baby. Both. दिस इज योर बेबी. ये आपका बच्चा है और आप इसके बच्चे हैं. बच्चे का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से. पीपल जज, ओ दिस इज माई बेबी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी आत्मा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दोनों का कॉम्बिनेशन है. One has to do for other has to do for you. And if you don't do for it, it shall not do for you. It shall force you sometime.
but it's up to you to what extent you understand that signal force. कल्पना नहीं मैं बता रहा आपको, आप सोच रहे होंगे काल्पनिक बातें कर रहा है, जानता मानता कुछ नहीं बोले जा रहा है। बोलना अच्छी बात नहीं है ज्यादा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रहा, मैं समझा रहा। बोलने का कोई फायदा नहीं, मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ बातों से, क्योंकि मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैं दिखाना चाहता था लिखा हुआ मेरा अपना वो नहीं है, इस समय शेयर नहीं हो सकता, लेकिन मैं शेयर करूंगा, उसको जरूर करूंगा, ताकि आप डायग्राम्स देख सकें जो मैंने एवॉल्व किए हैं। यू कैन सी दोज डायग्राम्स, यू कैन सी दोज कैलकुलेशंस, you can see how I developed that, and that is really, I cannot say it's wonderful, but I can say that is reliably full. I'm not praising that. That is reliably full. वो इतना फुल है, इतना भरा हुआ है कि उस पर आप रिलाई कर सकते हैं आगे चलने के लिए, क्योंकि आपको जब तक समझ नहीं आएगा वो डॉक्यूमेंट, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बार समझ आ गया कि 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 4, if you once understand that, nothing remains there to be worried about. It's kind of application. You can say this soul is your charter, and you are charter of soul. आपका अधिकार है उस soul के ऊपर, because this is chartered for you. This is not chartered for something else. It's not chartered for someone else. And if you just divide your life into, oh, this group is mine, I'm not talking of a body group or group of people. I'm talking of gurus which come often, yeah, and they lack of something. कभी कभी क्या होता है, जिंदगी की ठोकर खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने तो खा ली, दूसरों को तो बचाया जा सकता है अगर हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको आप बताएंगे ना वो सुनना नहीं चाहता। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। To whom you have to tell, you want to tell, even your sibling or even your parent or your kids, they take it lightly. They don't care. Oh, he's guy or old man. He has no other way. He is just wasting our time. They will say, okay, 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 but nobody would listen and play that hour. This happens. Okay, 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 we do, and that okay, okay, okay can never work. And that's why I say, don't just say okay. Do it. In beginning, you'll find problems. You'll get earlier fatigue. You'll be tired. But doesn't matter. This is your soul. It shall just give you more energy, and you will come to full-fledged, working, efficient profile of living. Your blood pressure will be right. Your mental status shall be right. You shall keep walking and walking and walking to loosen and loosen and loosen impurities from your soul. And that is very significant. People think walking it gives only physical act. No, walking means your soul is also walking with you. That is difference. You don't think it's sleeping. Your walking means this also walks. You try sometime. You think while you're not walking or talking, and you think when you're talking or you're walking, you'll find on all these individual categories certain information. You can out, you can calculate that one. It may be in art tube form or it may be in wire form. That's where concern is about. हमको पहचानना है अपने आप को, हमको खोना नहीं है अपने आप को, और हम पहचानेंगे। हर कोई पहचानेगा अपने काम से। आप देखना, अगर आपको शक्ति मिल रही है, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आपकी शक्ति रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, और आप कहेंगे ये सब मुझे 2 महीने में कहाँ से आ गया, हाउ कुड आई गेट दिस इंफॉर्मेशन 2 मंथ्स। और इस आत्मा की बातें हम अब बाद में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको नींद आ जाए। मुझे नहीं आ रही है, पर मुझे थोड़ा नहाने की तैयारी करनी है, और 1 घंटा भी हो चुका, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता।
जय भारत जय विश्व। और आत्मा आपकी अच्छी रहे, शक्तिशाली रहे, अपनी आत्मा को बढ़ाओ। 2024 मैटेरियल सॉल्यूशन, इमोशनल टाइम, मैटेरियल विद इमोशन। 24 दो और चार का इफेक्ट। दो का मतलब मैटेरियल, टू मीन्स मैटेरियल, टू मीन्स सॉइल, टू मीन्स वेल्थ, एंड फोर मीन्स liquid, four means emotion, four means sentiments, four means solution, and then material solution, material, you can say walk. Four is also walking, and also I say four means people. In people having four, they are used to lying. Please don't lie, and also please do not be emotional. That is what I would say, and I'll talk to you next time. Thank you very much.